Good evening, everyone. Good evening. Yes, welcome, Manish ji, all of the participants, welcome on. And today, it's our third day of the 8th Mavin Spiritual Festival, and lots of things coming up more. So let's start with our usual card of the day. And so, Nupuji, we are waiting for it. Over to you. Thank you so much, Minuji. Again, today is so beautiful day with so many lights spreading all around us. And today is the day where we are going to see our light, human light. Let's see what card says about it. For today's session, I'm shuffling the card. These are the cards, light cards, and they are connected to divine light. And let's take out the card. So, card of the day. This is the card of the day. Oh, beautiful card. Priestess. How are you being called to step up and lead? Wow. And I feel all the trainers, all the healers, and all the teachers, they are going to teach us a beautiful, beautiful method how to lead our life and how to go and move ahead in this world, in this life, leaving behind all our negative past. So with this, we continue with this session. Over to me. Wow, that was a beautiful message from the light angels, like pepping us up. Yes, we have to rise, step up. Great. Thank you so much, Nupurji. So before I introduce the expert for the day, Mr. Manish Kumar Sinha, I would like to invite the participants if they would like to share anything about their learnings from yesterday. Anyone would like to share anything? Yes, come on, people. I would like to say something. Yes, please. Yes, please. I would like to say only one thing. All of you have seen Sholay. Why not? You respond on Sholay. कितने आदमी थे किन लोगों ने नहीं देखा Please share. कितने आदमी थे Please unmute yourself and tell. And this is what Mandela effect is all about. Right. Yes, it was wonderful yesterday knowing about Mandela effect. It was an eye opener session. In fact, no, people have not realized it कि हम लोग अपनी memory जो है जो collective memory की बात की थी आपने डॉक्टर नुपुर. So how we are misremembering, right? और वो ऐसा ritual बन गया कि मतलब 2 ही आदमी थे शायद. तो but actual में 3 आदमी थे, है ना? तो it was You made a mistake again. You got it. तो 2 आदमी थे actually. And you know, there is a very dangerous side effect of this Mandela effect. Veeru and Jay. 2 आदमी थे, Veeru and Jay. Right. So I was sharing a very dangerous side effect of this Mandela effect. Husband and wife recall an incident from different perspectives. फिर देखो कितनी argument होती है उनकी. So good. It was very good. And just to share my things, in fact, कल के session से कि जब crystal की बात कर रहे थे हम लोग, we were talking about crystals, how homes and offices can soak up the energies and then emotions, right? वो last मैंने summing up करते हुए भी मैंने ये बात की थी, and how it is very important
दैट कि हम अपने ऑफिसेज और होम्स को एक सेक्रेट प्लेस की तरह ट्रीट करें, राइट? एंड ऑफ कोर्स द क्रिस्टल हैज द प्रोटेक्टिव नो energies and they forge protective boundaries. So it was a wonderful session of शीतल खुराना जी, एंड बहुत अच्छा लगा सुन के कि बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हमें जिसमें हम आगे और रिसर्च कर सकते हैं. Right. So, okay, anyone else would like to share anything? Yeah. शीतल जी ने कहा था, she said, where green crystal. उनके कहने की देर थी, and I started getting green vegetables. Wow. Oh my God, that was amazing. Great. बहुत शीतल जी, बढ़िया, thank you so much. बहुत बढ़िया. That was awesome. और किसी को कुछ शेयर करना है? So I think Mandela effect was really new for us, uh-huh. and like I really did not know about it. I think Neelam ji wants to say something. Yeah, yes, Neelam ji. You have to unmute yourself. Neelam ji, unmute yourself. आपने हमें ग्रीन कलर के ब्रेसलेट्स भी दिए थे. कलरफुल. Right. So आपके घर में ग्रीनरी रहेगी हमेशा. So, okay, we'll push on to the topic of the day, which is human aura. And I would like to first introduce our expert of the day, Mr. Manish Kumar Sinha. He's a wealth wizard, being a chartered accountant. And his expertise has also given him the opportunity to appear on TEDx Talks, which is awesome. Congratulations, Manish ji. And he's associated with various educational platforms where he imparts educational information regarding wealth creation, tax planning, startups, all things connected to finance. So today he's going to bring his expertise on spiritual aspects to be an expert of the day on our panel. So Manish ji, आपको थोड़ा सा alert होके सुनना है, and at the end you will summarize and ask any questions you feel or invite the audience to ask questions. So, okay. Thank you, ma'am, for introduction, and let me try to do my best. Yes, And I'm sure you let's will. hope what's happened. Yeah, I'm sure you will too. Yeah. Thank you for joining us. Yeah. So now on to the first speaker of the day, Sandeep Kumar ji. He is the founder of Be a Better You, which works in the area of psychological wellness. And he's also a capacity building professional and a business coach. And he has been associated with the business and management world in various capacities. And that has honed him to be an expert in training, coaching, and mentoring. And today he's going to guide us how to access our inner light and so gain spiritual illumination. So over to you, Sandeep ji, please help us. Okay, thank you so much. Thank you so much for inviting me. And whenever I start the session, I always give gratitude to Mavin platform because this is the platform where we really grow. All right. So I'm sure I have the permission to share the screen. Yes, I have. Yeah. Okay. So let me share my screen straight away. It is loading. Okay. Are you able to see my screen? Yes or no? Yes, we can. All right. So I'm making it a little large. Okay. All right. So my topic of the day today is inner light and spiritual illuminations. All right. So before I go further, I would like to show you a video. So let us watch it together. Let us see how it goes. And then after that, we'll go to the concept part of it. And then we will slowly build it up and we'll see how inner light works in our life and what it is all about, first of all, and then how it works and how it is connected with spiritual illumination as well. All right. Okay. So let me share this video. Just give me a moment. Yes, first of all, I'm making the sound. Okay. Share sound. Okay. You're able to see my screen, isn't it? All right. Okay. So I'm playing the video. Let's enjoy this video first.
here it goes. And just give me a thumbs up when you start, so that I am sure that your this voice is going to you. All right. Okay. Enjoy this. I was once told that to become who you might be, you have to walk away from what you are. That maybe I couldn't see it at the time, but somewhere locked away in the depths of my soul existed the spark, the flicker of light that would change everything. All I had to do was find it. Those footsteps, they define your destiny. A symphony that becomes your soundtrack, wind for your sails. They are the song that will guide your journey. In your pockets, they can be empty if your heart is full. The book can be unwritten if you hold the pen. The path can be unclear if you just trust yourself. This is the lens that illuminates your world. And when you fall, promise to get back up. When you feel misplaced, remember that getting lost is how you find yourself. When you're scared, know that it's darkest before the dawn. These are the stairs that will take you higher. Tired is not defeated. Wandering is not lost. Vulnerability is not weakness. Mistakes are not defining. Hardship is not a deterrent. These are pages in the story you're writing. And it's the story of a lifetime. So pull back the curtains. Dance in the moonlight, sing at the top of your lungs, so that every soul from here to infinity ignites. Life is too short to miss a moment, too beautiful to overlook, and here you are, with a map, a key, and a horizon waving you on. So follow it. Through the airwaves, past the mountains, beyond the desert. Follow it until your legs are weak and your eyes wide. Let it be the song that carries you home. This is the story of a lifetime. World within, right? It's all within ourselves, isn't it? All right. Okay, so after this video, let us go ahead further. Sorry. Yes. Okay, so we're talking about light. Hope this video gives you little indication that we are seeking something inside, from inside us, right? Right. So world within. It's a journey of a lifetime. So light, when we say light, what it is all about? Is it a sunlight, or it is a torch light, or is it a candle light, right? What it is light, what light it all about? Neon lights that banishes the darkness from our caves to illuminate our path or road that we seek, right? That is the neon lights, or physical lights we are talking about. Little tiny flashlights for those books we read under the covers when we were supposed to be asleep, right? These are those lights are there, right? Or light is more than the watts and the food candles, right? Light is a metaphor. Light is a knowledge, isn't it?
And light is life. As I said, the world of light is within us, inside us. So what is it all about, the inner light? So as we go through the light, we talk about the inner light. What is the concept of inner light? Let us see that. This light is sought from within and is most commonly known as the inner light. We say it, right? And it is used in spirituality more often and philosophy also. So we experience this light as a manifestation of the divine that can be communicated with. So that means that divine is within us. And we'll see how it is. And the light is a personal spiritual revelation, a source of enlightenment for oneself, right? When talk of enlightenment, we'll talk a little later also about the enlightenment and illumination. So inner light is a concept often used in spirituality and philosophy, as I said, referring to the divine light or divine spark within each individual. We all have that divine light. We all have that divine spark, and that is believed to be directly communicated with your higher power or our higher power or the universal source or universe, whatever you say, whatever metaphor you give to that energy, right? You call it God, you call it energy, you'll call it anything, you'll call it universe, right? So it represents one's inner guidance, personal enlightenment, or spiritual awakening, and is often associated with wisdom, truth, and inherent goodness. So this is the concept of inner light. And let's understand, थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि inner light को हम और कैसे explain अच्छे से कर सकते हैं और कैसे इसको experience कर सकते हैं. तो spiritual angle से अगर हम देखें, spiritual meaning of light क्या हो सकता है, right? The inner light is your real self. वो आप ही हो, right? You are the light. It is not yourself as in you think you are, but a self that appears when the mind is silent. जब आप बिल्कुल इत्मीनान से होते हो, आपका mind बिल्कुल unlearn किए होते हो आप, और आपका mind बिल्कुल empty होता है, तो you are your own light at that point of time. To realize your oneness with that light, strip away everything that is blocking you from realizing that this truth, your inner light is always on. You just have to identify it. You just have to experience it. और आप experience कैसे करोगे? जब आपका mind जो है silent mode में रहेगा, आपके thoughts जो है, आपके thoughts आने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ultimately you will start reflecting yourself as an inner light. So we'll see. This is the spiritual meaning of it. Now, inner light, I say the journey within. I started this video with the journey within. So I'll take it along the journey. ये सारी journey तो अंदर की है. जब आप अंदर की journey में successful हो जाते हो तो बाहर की journey अपने आप आसान हो जाती है. Right? So अंदर की journey में जब हम जाते हैं, जब start करते हैं, we are in our life journey. Every day brings you new shine. Everything transpires to push us to the successive level of spirituality. अगर मैं सिर्फ spirituality की बात करूं, right? अभी मैंने इसको spirituality से ही जोड़ा है. So as the morning sunlight comes out in the morning, our daily activities start to make our day brighter than yesterday, isn't it? Yes, we can choose with the actions we do daily. And our life starts when we start comprehending our elevated self-realization. हमारी जिंदगी तभी शुरू होती है जब हम realization को, अपने self-realization को एक next level पे लेके जाने की कोशिश करते हैं. A new light enters our life to show us the true motive of our life. What is our purpose? We have been, since the day one we talked about, I talked about purpose also in my reflections as well, isn't it? So a new light enters our life to show us the true motive of our life, right? And this inner light serves as a mentor, a guide, right? A guru, whatever you can say. Inner light serves as a mentor to take us to the supreme almighty God. You say it God, you say it universe, you say it energy, whatever, Our soul is a light that develops our paths for our mind and actions we accomplish to do our daily actions.
So that this is how your inner lights paves the way to make your daily actions. आप कैसे actions करते हो ये आपके inner light से कहीं ना कहीं जो है वो reflect होता है और कहीं ना कहीं वो prompt करती है आपको जो आप daily actions कर रहे हैं, right, in our life. So inner light, the journey within will continue. Inner light can also be called as our perception. It can be awareness. It is a focus, attention, reflection, etc., etc. Whatever you call it, right? So inner light क्या ये आपका ही reflection है. It is your self reflection. The inner light is reflection of ourselves, isn't it? And the real purpose of our life is to scan for the inner light within and follow it till the time we see, feel, and sense the power of this light. अब ये, who will feel the power of this light? Those people who will see the power of this light, जो इसमें believe करते हैं, जो believe करेंगे उन्हीं को ये experience हो सकता है या होगा, right? Because belief is very, very important here. The magic of the light happens for those who believe in it, right? तो वो magic experience कर सकते हैं inner light का. And when I talk about spiritual illumination, because we are talking about inner light and somewhere or other we are taking it to spiritual illumination also. So we will see how it is related, the inner light is related with our spiritual illumination. So let's understand spiritual illumination also. So abhi maine inner light ki baat ki, abhi I'll give you a perspective on spiritual illumination also, then we'll correlate it according to your understandings, right? So spiritual illumination can be described as an enlightening or awakening experience that transcends the physical realm. आप physical realm से बाहर निकल जाते हो, right? And practices such as prayer, meditation, contemplation, ये सारी चीजें जो हैं ये spiritual illumination को cultivate करती हैं और करती रहेंगी. Even the scientists, the researchers suggest that, and there has been validations. When you achieve this state, you become aware of your true self, which exists beyond the material world. And that is how you are leading yourself to spiritual illumination. And spiritual illumination promotes inner wisdom, intuition, and a deeper connection to the divine or higher power. So higher power is, according to, can be anything, right? According to your philosophy or understanding. So I take it as a higher power as a whole, right? So spiritual illumination promotes inner wisdom, intuition, and a deeper connection to the divine or high power. Now, there are 7 aspects of spiritual illumination, and I'll take it one by one, as I've tried to cover it, most of them as a limited time is there. All right, so 7 aspects of spiritual illumination. Let us understand one by one, and then we'll see. Now, the aspect is, first of all, is your definition. Definition, as I said, spiritual illumination is your getting elevated on your inner awakening, where an individual gains deep insights, understanding, and the sense of unity with the universe, right? वो एक universe के साथ वो कहीं ना कहीं alignment आ रही है और कहीं ना कहीं upliftment हो रही है और वो upliftment उसको spiritual illumination की तरफ लेके जा रही है. Right. And spiritual enlightenment is the path to spiritual illumination. Now, what is the purpose of it? The purpose of spiritual illumination is to enable personal growth, self-discovery, and the purpose of truth, love, wisdom, whatever you call it. It seeks to bring harmony and balance to one's life and promotes a sense of connection and compassion towards all living beings. Right, there has to be a compassion. Otherwise, if the compassion is lacking, then you are not on a path of spiritual illumination, or there may be some kind of an illusion of spiritual illumination. So this is the purpose. So first the definition, second is the purpose. And now what are the practices for spiritual illumination? Practices that may lead to spiritual illumination includes meditation, of course, mindfulness, prayer, yoga, whatever you do as your spiritual growth, right? And various form of spiritual discipline, right? It can vary from individual to individual. So these practices help you to clear your mind, quiet your mind, open your heart, and create a space
within yourself for spiritual insights to arise. So तभी आएंगी जब आप ये practices करोगे, right? Otherwise, it will be superficial. You have to go deep within yourself. You need to find yourself in that discovery of yourself, and then these practices will lead you to your spiritual illumination. You can do it step by step. You cannot achieve it एकदम से किया और वो हो गया. कोई भी प्रैक्टिस आप ले लो, मेडिटेशन ले लो, प्रेयर ले लो, माइंडफुलनेस ले लो, ग्रैटिट्यूड ले लो, whatever, yoga ले लो, right? In fact, just to share with you that I've been a regular following of yoga practices, और मेरी 4 दिन से योगा वाला नहीं आ रहा मेरा कोच, तो I've been saying that why he's not coming. I've been trying my best, but still what is happening is that I feel somewhere I am going back. So I called him up. Where are you? Right? Handhold me and get me on the right path. Right? So it doesn't. ऐसा नहीं है कि मेरे को आता नहीं है करना और मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन I need somebody who can put me constantly to that particular path. So practices are very important. And then experiences. Individuals who undergo spiritual illumination might experience a sense of oneness with the universe, as I said earlier also, profound inner peace, heightened intuition. Your level of intuition will go high, and a deep sense of love and an understanding of an interconnected. So everything, सारी चीजें एक दूसरे से connected है. ये all things, everything is somewhere or the connected, and it is taking you to your feeling of or getting onto the path of spiritual illumination. And then what is the benefit? Benefit for spiritual illumination can be improved mental and physical health, of course, and increase empathy and compassion, enhanced creativity and your problem solving abilities. Your skills getting developed better, better and better, and great resilience in facing life's challenges. Every day there is a challenge. Day wise there will be a challenge. So these are the benefits when you start cultivating your practices, start cultivating your mind in terms of on the path of spiritual illumination. There are some famous example. Buddha को ज्ञान मिला था बोधि ट्री के नीचे, right? That was a spiritual illumination, as I say, right? Or there are other examples also. The Christian mystic Sir John of the Cross, Dark Night of the Soul, and the Sufi poet Rumi, which is a very good example for as far as spiritual illumination is concerned. जो उसने अपने टीचर के पास जब वो गया, तो after meeting his teacher, Rumi got the spiritual transformation, right? And misconception क्या है? There are certain misconception also at this spiritual illumination. So let's address that also briefly. Spiritual illumination is often misunderstood as a state of constant bliss. कि आप हमेशा जो है, अगर spiritual illumination की हम बात करें, तो अगर आप either you are on a verge of getting a spiritual illumination, or you say yourself you are spiritually aligned. So it is a misconception that always that person will be on a constant bliss की situation पे ही रहेगा. And at the end of the point of the spiritual growth, कुछ भी होगा तो वो कोई हमारा या तो वो religious figure होगा, उसी को alignment हो सकता है, या spiritual illumination हो सकता है. It is not like that. हम आप सब जो general जो हम लोग हैं, we all human beings can experience spiritual illumination, right? So it's a continuous journey of growth, and people from all walks of life can experience spiritual illumination at various levels, and various levels. Of course, the levels degree can vary, but ये misconceptions अभी हैं और इनको हमें धीरे-धीरे दूर करना है. Now we talked about this 7 spiritual illumination. Now let's see what is the best way for spiritual illumination. That's an obvious question you can ask me, right? What is the best way for spiritual illumination, right? So सबका best way अपना तरीका है, but actually there is not a simple any best way. कोई best way है ही नहीं for getting
yourself to your spiritual illumination, there is not best way, कोई define नहीं है. और वो spiritual illumination is a journey. ये constant journey है. The more you know about it, the more there is to know. जितना आप जानोगे और भी ज्यादा जानना है उससे, right? So it's not a destination, this is a journey. So we cannot say ourselves that हम आज की डेट में spiritual illuminate हो गए. So constantly you need to work on it. जितना आप जानेंगे उतना और जानना है. So spiritual illumination is infinite or for eternity. ये you cannot measure it, right? So one belief that will help you to shift from the linear thinking to metaphysical thinking, that is your spiritual thinking, is accepting that your soul is what you are. If you realize that, then you are on the path of your spiritual illumination. हम यहीं पे गलती करते हैं, हम human beings यहीं पे गलती कर जाते हैं, that we don't understand that we need to accept that fact. Spiritual level पे अगर हम बात करें, that जो हमारी soul है वही हम हैं, right? So your body is merely the vehicle you choose this time around. मेरे ख्याल से ये हमने अपने वेदास और अपने ग्रंथों में भी पढ़ा है, right? If we talk about if I talk about Hindu mythology or something like that, right? So body is merely the vehicle you choose this time around. So it is a constant journey. It's for infinite or eternity, and it's a ongoing process. So find yourself inner light and spiritual illumination, right? मैं ये कहता हूं और हमेशा कहता रहूं, मैं अपने इंटरैक्टिव सेशंस में भी ये बोलता हूं, खुद को पा जाना, खुदा को पा जाना. अगर आपने खुद को पा लिया तो आपने खुदा पा लिया, राइट? क्योंकि अपने आप को जिस दिन आपने पूरा जान लिया, उस दिन गॉड इज विद इन यू. गॉड इज विद इन अस एक्चुअली. So if you are able to know yourself, you are able to find the God. And this is a hard fact which people ignore. And लोग जो है वो बाहर peace या शांति या और दूसरी चीजें ढूंढते हैं. Instead of working on ourselves, what we do is we start working on others, right? That's the irony of the things. We need to be aware of that. Now, does inner light lead to spiritual illumination? Let's see that as well. Yes, you will find it by experience if you practice it. As simple as that. And it gives you joy and peace. There is a connection between inner light and spiritual illumination. And when you start practicing it, various practices, as I mentioned earlier, right? It will give you joy and peace. And the divine power there in you, as we started, within you, it need not come from somewhere outside you, right? Only you have to prepare the ground so that it may manifest itself. आपको सिर्फ ground prepare करना है. Manifestation of divine power will be there. और वो ground आप कैसे अच्छे से prepare करते हो या वो pitch कैसे तैयार करते हो. अगर आपने pitch अच्छी तैयार की है तो manifestation होगी, the divine power will be there to protect you. So the answer is yes, that the inner light leads to spiritual illumination. Now, this is a Zen story. I would like to share it with you. Zen story is that कि एक scholar था, वो Zen master के पास गया और Zen master ये कहते हैं, वो Zen master ने कहा, उससे पूछा स्कॉलर ने कि does God exist? क्या God exist करता है? तो Zen master जो है वो क्या कहते हैं? Let's see that. A great scholar philosopher traveled to a long distance to meet the Zen master. He asked the master, does the God exist? So Zen master says that take a rest, and then he started making tea for them, right? अब वो जब Zen master चाय बना रहे थे, so उन्होंने चाय बनाई और केटल भी साथ में लेके आए और कप में वो चाय डालने लगे, राइट? अब वो चाय का प्याला भर गया लेकिन वो फिर भी डालते रहे. He still went on pouring the tea from the kettle. So the scholar asked कि Zen master, ये तो
प्याला तो भर गया, आप why don't you stop it? So he started pouring tea into the cup. He continued to pour tea even when the cup was overflowing. The scholar asked the Zen master to stop because cup is already overflowing. Zen master then said, what? Empty your cup first to receive some tea. Your mind is overflowing with information, and get to the truth, you need to empty it. So unless and until you empty your mind, you empty all your knowledge, you start unlearning to learn something better, you'll not be able to go on a path of spiritual illumination. So this story is very, very interesting and correlates with our spiritual illumination. तो हमें अपनी सारी चीजों को अनलर्न करना है. Spiritual, I'm talking about spiritually also, I'm talking about non-spiritually also. So once we start unlearning ourselves, we'll be having space in our mind to go further on the path of spirituality, isn't it? All right. So 5 tips to find and nurture your inner light. Number 1, rest and reset. Take a break. अपना रेस्ट करो और अपने आप को रीसेट करो. टेक टाइम एंड सिट विद योरसेल्फ. आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ जो कि आपके अंदर से आने चाहिए. बी इंक्विजिटिव अबाउट योरसेल्फ, राइट, एंड प्रेस द रीस्टार्ट बटन. जैसे कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप में होता है रीस्टार्ट बटन ना, वैसे हमारा भी रीस्टार्ट बटन है. यू टेक ए रेस्ट एंड देन रीसेट योरसेल्फ. Practice gratitude. I've always been talking about gratitude, and I've been taking numerous sessions with Mavin and otherwise also. Practice gratitude. Do a lot of journaling. Simple journaling will tell you that how it is taking you to awareness, and how your inner light, you can nurture your inner light. Your thinking process will be very, very clear. And write and speak positive affirmations. Affirmations like, I am love, I am purpose. We're talking about purpose more often these days. So I am love, I am purpose, I can reach for the thoughts and feel better. These affirmations should come at the time of negativity also. How fast you bounce back from your negative situation. ये नहीं होगा कि कोई negative situation नहीं आएगी. But when you practice positive affirmations, you can write and speak. And then आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी ये पूछने की, ये कहने की positive affirmations. So love yourself. Practice self-care and take vitamin D by going out in the sun, not the tablet. Right. So nurture yourself. Whenever you feel down, nurture yourself, lost or disconnected. Try these practices to help you reignite with your inner light. And I'm sure that once you start these practices, you'll be more clearer. Your inner light will give you the guidance, right? Inner light कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका आप कैसे सेल्फ रियलाइज करते हो अपने आप को. दैट लाइट इटसेल्फ जो है, दैट विल गिव यू द पाथ. सो नर्चर योरसेल्फ, नर्चर योर जॉय, नर्चर योर इनर लाइट, एंड व्हेन यू आर रेडी, शाइन योर लाइट टू द वर्ल्ड. रेडिएट करना है. लेट्स रेडिएट आवर लाइट टू द वर्ल्ड. लेट्स रेडिएट आवर लाइट टू दिस कम्युनिटी, ऑल काइंड ऑफ कम्युनिटीज, राइट? एंड व्हेन यू आर रेडी, shine your light into the world, of course. So we are all meant to shine our light, right? We are all. So we don't have to be Tony Robbins or Oprah in order to share our gifts, right? जो हम हैं वही रहना है. We don't have to write a book, or we don't have to be in Shark Tank or even a speaker or teachers. Whatever you are, who you are, start radiating light, our inner wisdom, self-realizations जो आपको हैं. We contribute to the world by being who we are. Of course, you don't need to be different. You have to be who you are. We make a difference by uplifting ourselves and allowing ourselves to grow and expand our perspectives, right? And we become a source of light to others where we stay connected with our own inner light. So जब तक हम अपने inner light में रहेंगे, so we will be able to connect to others also. So जो आपकी realization है वो शायद कहीं ना कहीं वो vibrate करेगी और दूसरों को भी वो रास्ता दिखाएगी. So आप अपना तो inner light पे काम कर ही रहे हो, दूसरों को भी you are अपनी community में, अपनी family में,
अपने friends के साथ, you are radiating that inner light as well, right? So this is all about अभी टाइम है 3-4 मिनट का मीनू जी, और shall we? No, I think we should wind up now because it's Okay. already 40. Yeah. All right. So मेरा इसके बाद सिर्फ meditation कराना था. If time permits, we'll do it later. Yeah. Or over to you. This is what I wanted to say in this session. And over to you, Meenu ji. Okay. Thank you so much, Sandeep ji, for keeping those time constraints in mind. Thank you. And that was an amazing session on how to illuminate ourselves with our own light, which is Thank you. awesome. Thank you. So I'll move on to our next speaker of the day, Dr. Manisha Jain. And by education, she is a PhD in mathematics and a Vedic maths teacher, basing her teaching theories on quantum principles. And by passion, she's a learner of occult and mystical sciences, a healer, a psychologist, and she's working on quantum healing theory as she's a devotee of quantum vibrational field. She is also an Ikigai expert, a mudra therapist, a genetic brain profile counselor, and teaches a unique concept, brain gym, which is amazing. And today she's going to talk about the human aura and how it is a mirror of life. So I welcome you, Dr. Manisha Jain. Please, over to you. Thank you so much for a nice introduction. Although Shabana ji asked me for my introduction, so I have given very short introduction, but I don't know how you have fetched all the data. Thank you so much. And thanks to Mavin platform, whatever I am today, whatever I can speak in front of you people, this is the gift of Mavin. And Mavin बोलते ना, it's a पारस मणि, जिसको भी टच करता है वो सोना ही हो जाता है. So thank you so much for being in our life as a paras. And I am really thankful to Sandeep ji, Sandeep Kumar ji. Thank you so much. आपने मेरा ये सेशन बहुत इजी कर दिया. And today I forgot कि आज मेरा सेशन है. I was too much busy. Okay. But when Shabana ji called me, अरे आज आपका सेशन है, then I thought, oh my God, now what should I speak? And then when I have created my, PPT and all these things, then everything is useless. You're absolutely right today. Because whatever we can see, sometimes your programs, sometimes your steps, you will fail in it. And this is the reason of dishearten. आप कभी कभी डिसहार्टन हो जाते हो कि यार मैंने इतनी प्लानिंग की थी लाइफ में और सारी की सारी धरी की धरी रह गई. This is actually what is the truth of the moment. My guru always says, you have to look into truth of the moment, and then you will see how spiritually your soul will illuminate. And your today's topic is spiritual illumination. Thank you so much. मेरा पूरा काम आपने आसान कर दिया. Thank you. And Thank I'm you not so at all going to show anything. और आपके स्पीच को, आपके लेक्चर को मैं कंटिन्यू करती हूँ. And we will see how we are eliminating. Sure. आज हम बहुत ब्यूटीफुल एक मेडिटेशन करेंगे. And we will see how we will eliminate and how we can expand. So today's my topic is human aura, mirror of your life. So whatever inside, we are outside. We have whole universe inside. We have whole universe inside. If we feel irritating, हमको सारी दुनिया ऐसी लगेगी हमारी दुश्मन है. And when we are one with the God, one with the cosmos, हमें लगेगा हमारी पूरी दुनिया एक है ना? We are the Krishna, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि. मैं भी God, तुम भी God. जब मैं बोलती हूँ कि I am only God, तो arrogancy आ जाएगी. But you are also God, तत्वमसि. जैसे मैं हूँ वैसी आप हैं. So how you want to reflect your world? Whatever you are inside, you will see the world outside. तो जो हम है वही तो मिरर करेंगे. And हमारा जो ऑरा होता है वो बहुत important रोल प्ले करता है. अब I'm not at all going to speak on what is the color of aura, because here all are genius. जितने भी लोग बैठे हैं, they all are practitioner. बहुत सारी practices कर रहे हैं. I can see Dr. Nupur, she is excellent in her, modality. Meenu ji, Sandeep ji, सारे लोग जो हैं, नीलम जी, सब एक
मतलब सारे के सारे इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे और सब अपनी जर्नी पे हैं एंड दे नो हाउ टू सी द ऑरा। उनकी महानता है कि जो आज इस सेशन को बैठ के हमारे साथ मेडिटेशन करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग, हाउ वी कैन एक्सपैंड अवर ऑरा। तो हम अपने ऑरा को एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं? सबको पता है कि मेडिटेशन, डेफिनेटली मेडिटेशन हेल्प करता है, बट टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन मोर वर्ड जो मेरे गुरु ने मुझे दिया, वो है सिंथेसिस। कैसे हम अपने थॉट्स को सिंथेसाइज करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सीखा है लेट गो, ठीक है, लेट गो करो, लेकिन आप ये देखिए कि वी आर लिविंग इन कंप्यूटर एरा, सारी चीजें हम लैपटॉप मोबाइल और इस पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी फाइल डिलीट करने के पहले हम कहाँ भेजते हैं? उसको रिसाइकल बिन में भेजते हैं, एंड ग्रेजुअली वो रिसाइकल बिन फुल होते जाता है और वन डे इट विल पॉप अप कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो फुल हो गई है। फिर आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू रिसाइकल बिन एंड देन वहां से कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाते हैं। वी आर जस्ट लाइक दैट, वी आर नॉट एट ऑल, जिसको बोलते हैं ना स्वाहा करना अपने थॉट्स का, वो नहीं करते हैं। वी आर ना सेफेस्ट साइड, हम उसको बचा के रखते हैं। जब हमारी अभी अभी अब डिस्कशन चल रहा था, मीनू जी ने बहुत अच्छा बोला कि एक ही थॉट अलग परसेप्शन, हस्बैंड वाइफ के बीच में युद्ध का मैदान। सो दिस इज लाइक दैट। वाइफ सोचेगी यार जब लड़ाई होगी ना मैं बताऊंगी कि तुम दैट डे क्या बोला था मुझे, हस्बैंड भी बोलेगा ओके मैं भी थोड़ा सा उसको ना डिलीट नहीं कर रहा हूँ, रिसाइकल बिन में डाल के रख रहा हूँ कि व्हेन कुछ फाइट होगी तो मैं भी सारे के सारे उखाड़ूंगा और बताऊंगा तुमने उस दिन मुझे ये बोला था। So it is happening in our life, and in spirituality what we are doing, we are recalling it. This is called synthesis and then control alt delete. भाई तू जा हमारे दुनिया से, because when we are keeping all the things, my aura is infected. मेरा aura जो है वो scattered हो रहा है, मेरा aura खराब हो रहा है। So before doing any act, think about कि मेरा aura कहाँ जा रहा है, what I am creating for myself. Don't forget about what I am creating for others. मैंने अपने आप को पहले ये भी पढ़ा, मैंने वो भी पढ़ा, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मुझे लगा यार सटल ईगो आ रहा है मनीषा तेरे में, छोड़, सब कुछ नहीं आता तुझे। एक दो स्टोरीज और अभी सुनी, एक दो लेक्चर्स सुने वृंदावन के, कान्हा जी को सुन रही हूँ, मार्वेलस लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज्ड एंड यू कैन फील योर ऑरा। बहुत सिंपल है अपना ऑरा देखना। टुडे वी विल सी द ऑरा। 3 स्टेजेस पे मैं लेके जाऊंगी। पहले अपन देखेंगे कि व्हाट वी आर फीलिंग, व्हाट इज आवर ऑरा, एंड देन एक म्यूजिक के साथ जो है हम अपने गॉड गॉडेसेस को इन्वोक करेंगे और हमिंग करेंगे। और हमिंग करने के बाद वी विल ऑब्जर्व अवर ऑरा कि हमारे ऑरा में कुछ चेंज आया और जिससे हमारी लड़ाई चली। देखिए ट्रुथ ऑफ द मोमेंट ये है कि सबकी सबके साथ लड़ाइयाँ होती है। हम सोचे कि हम बहुत इवॉल्व हो रहे हैं, बट हमारे लाइफ में इतना ट्रिगर होता है, कभी बाई नहीं आई घर में, मेड नहीं आई, कभी वर्क स्टेशन पे हो गया, कहीं पति से हो गई, कहीं बच्चे से हो गई, कहीं 5 पैसे के लिए हो गई, कहीं सब्जी लेने गए वहां से हो गई। हम अपने ऑरा को रोज खराब कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत पॉजिटिव है पॉजिटिव, आई ट्राइंग टू लिव एवरी टाइम 24/7 हम पॉजिटिव रहना चाह रहे हैं, बट समवेयर ट्रिगर तो होता है। तो वी विल सी। और आज हम एक केस लेंगे जहां आज भी हमें प्रॉब्लम, देखिएगा आप जब जाएंगे उस ट्रांस में हम लेके जाएंगे, कोशिश करते हैं अपन ट्रांस में जाएं, देखिएगा कौन सा बंदा आ रहा है आपकी लाइफ में जिसको आपको लग रहा है यार अभी भी मेरी लाइफ है ना उसके कारण मैं ट्रिगर होती हूँ। Just imagine he is sitting in front of you. We will scan our aura and we will scan his aura also. पूरे top to bottom हम उसको scan करेंगे and we will send too much love to him. और फिर देखते हैं कि क्या मेरे aura में सच में क्या spiritual illumination हो रहा है. That is the आज हम that we will do. And संदीप जी once again thank you so much. आपने कहा gratitude होना चाहिए, तो मेरे को बहुत gratitude आ रहा है आपके लिए. Thank you so much. Thank you so much. So let's see. Please close your eyes. प्लीज क्लोज योर आईज। आपने स्पेक्स पहने हो तो आप स्पेक्स उतार दें, बिल्कुल फ्री होके बैठे, बिल्कुल आपकी गर्दन कमर सीधी इरेक्ट, बिल्कुल जहां पे भी आप बैठे हैं बिल्कुल उस पूरे कमरे के लिए एक बार ध्यान से देख लें उस कमरे को, क्योंकि वो भी आपकी एनर्जी को हैम्पर करता है, आपकी एनर्जी को वो भी कहीं ना कहीं हिट करता है, आपके ऑरा को हिट करता है। क्लोज योर आईज। अपने दोनों हाथ जो है अपने पाम पे खुले रखेंगे, अपने सॉरी लैप पे खुले रखेंगे बिल्कुल। इफ पॉसिबल आप अपने फीट को ग्राउंड पे टच कर सकते हैं, इफ नॉट इट्स ओके। क्लोज योर आईज, टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड।
जिसको भी आपको gratitude देना है, full of gratitude. And while breathe in, your stomach goes out. Look at your stomach. It is going out. And breathe in, stomach goes in. And जो भी आपके unnecessary and अपने energies आपने kept करके रखी है, you don't know what are the energies. Set an intention. I am breathe out all the negative energies from my body. Breathe in. Breathe out. Okay. A very huge mirror is in front of you. देखिए अपने सामने एक बहुत बड़ा मिरर है. With closed eyes, look at your image. And you're gazing your image. Forehead पे आप gaze कर रहे हैं अपनी image को. और image को gaze करते 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 पूरी body eliminate हो रही है, पूरी body. Now look at the border of your body. And look at the light around your body. This is called space. This is called consciousness. कितना space है? Half inch, 1 inch. Very good. Look at with full positivity. जो भी thoughts आ रहे हैं, क्योंकि thought creates our aura. Whatever thought is coming, आने दीजिए. Don't fight against the thought. Resistance हो रहा है कि मुझे नहीं करना ये exercise. Okay, let it be. Look at your aura. Feel the vibrations within. जब आप aura देख रहे हैं तो क्या vibrations हैं आपके body में? Hotness, calmness, tingling sensation, numbness, itching, throat choking, joy, sadness. Now there is a connection between you and your mirror. Look at the space in between. So you are standing in front of mirror. So there is a space between you and mirror. Look at that space. And nobody is in the room. You are alone there. You're gazing your aura. You're feeling your aura. What is the quality of this aura? Are you happy with this aura? Ask this question to yourself. Be authentic. We are a spiritual practitioner. So sometimes this thought will not allow us to be authentic. सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे लाइफ में, यही आता है. If not, एक भी thought आ रहा है कि नहीं, this is the dimension where I am not at all good. Some changes is required. First, empty yourself. Now look at the space around. आपके आसपास का space की quality क्या है? आपकी body will tell you everything.
soothing vibrations. Something is hitting, some pain in your body. Your eyes are itching, paining. Now this is the first step. How we can increase our aura, how we can expand our aura, how we can feel oneness with the God. Yes, meditation and synthesis process. You can touch your tongue on your palate. पैलेट पे टच करेंगे मुंह के अंदर अपने टंग को. Take a long and deep, beautiful breath inside, and we will do humming for 10-20 times. Now keep doing humming. And when you're humming, your vibrations are raising from your Mooladhar to Swadhisthana. Swadhisthana to Manipur. Manipur to heart. Heart to throat. Throat to third eye. And third eye to Sahasrara. In the next humming, energy is coming from Sahasrara to your throat, passing through your third eye, coming down towards heart chakra and heart chakra to your navel center, and then going back again from your root chakra to Swadhisthana, to Manipur, to heart, to throat, third eye. Third eye is on back of your eyebrows, and Swadhisthana. Please raise your hand in Akasha. Just you are holding Akasha. अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ फैला ले. With each humming song, with each humming vibrations, feel the aura of your both the palms, both the hands, aura around your head and the boundary of your back. पूरे body की boundary को feel करें. And now your aura is also expanding. जितना हमने हाथ फैलाया हुआ है, हमारी बाउंड्री भी उतनी ही एक्सपैंड हो रही है क्या? चेक करें. दोनों हाथों को अपने लैप पे रख लें. फिर से हमिंग को रोक दें. Feel the vibrations. And now this time, you are vibrating much more than before.
Can you see your expanded aura? What is the quality of this aura? पहले से बढ़ी हुई या उतनी ही? Can we do some qualitative analysis here? What is the color? Can you see the color of your aura? Can you smell your aura? Okay, observe your ears. Can you see aura around your ears? What is the color of your ears? What is the space around? Is it a dense aura or scattered aura? This is step 2. Now we will feel what is the shift in the quality of our aura. Now you can see your aura around. Let's invoke your cosmic vibrational field. God, goddesses, angels, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, बहुत प्रेम से उनको अपने ऑरा में इनवाइट करते हैं. I invite, आप बोलेंगे जिसको भी आपको इनवाइट करना है 3 times. You can speak loudly. Can you feel the change in your aura? Can you feel any downloaded energies? Energies are downloading. Can you compare the energy? Whatever energies we were having in first step, then second step, and now. Can you see the boundary of your body? Outline. Can you observe what is the quality of your aura? Now, in your aura, already you have invited cosmic vibrations, angels, God, goddesses. What is the truth of the moment? This is fourth step. Who is coming in your mind? To whom you want to talk? जिससे आप बात करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बात कर रहे हैं. Any childhood incidents, whatever is coming, जिसको अभी तक हमने अपने रिसाइकल बिन में डाल के रखा है. Imagine he is sitting in front of you.
बहुत सारे लोग आ गए होंगे, आने दीजिए। आई टू आई कांटेक्ट, उसके आईज में देखिए। आर यू एबल टू फेस हिम, फेस हर? उसके चारों तरफ का ऑरा देखिए। अब उस पर्सन के जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके बॉडी में, अपना ऑरा देखिए। नाउ यू आर वन विद गॉड। देखिए क्या आपने उसको माफ कर पाए हो? Feel the space between you and that person or any incidents. You don't speak anything, just we are watching our thoughts. Look at the person. Recall the incidents. And when you are recalling the incidents, what is the vibrations in your body? Look at the vibrations in your aura also. एकदम क्वालिटी चेंज लगेगा। चलिए 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि हमारे साथ उसने कुछ गलत किया है। 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि हम ही हैं सामने, वो पर्सन के फॉर्म में हम ही हैं। Now we will start healing to ourselves only. What raises you want to send him? Because you are sending to yourself. Love, compassion, forgiveness, gratitude. Heart-to-heart connection. Your aura is touching to mirror of your life. Can you please mute? Can you feel some vibrations are going outside from your body to the person who is sitting next to you and none other than yourself? ओके, चेक करें अपने हार्ट को चेक करें। कुछ हल्का हुआ पहले से जब हमने 4th स्टेप करना स्टार्ट किया था? क्या हम हग कर सकते हैं खुद को? एक प्यारा सा हग। क्योंकि whatever we are seeing in outer world, we are reflecting our thoughts. चलिए परमानेंटली कंट्रोल और डिलीट करते हैं जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है किसी भी इंसान के साथ जो भी आया था आपके सामने। And this thought is one with the cosmos. गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से लेट गो कर देंगे इस बार। Breathe out from your mouth. Look at the Akasha and breathe out. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे
और अपनी फिक्र को धुएं में, आई मीन कॉस्मोस में ब्लो कर देंगे. One more time. Great. एक लंबी गहरी सांस लेंगे, वापस आएंगे अपने बॉडी में with full gratitude to ourselves first, to our body. ना ब्यूटीफुल बॉडी ईश्वर ने हमको दी है साधना करने के लिए. देवी देवता भी तरसते हैं. मैंने ऐसे कहीं पढ़ा है, सुना है, इस बॉडी को पाने के लिए. Thanks to all देवी देवास, angels, cosmic vibrational field, जिन्होंने आज हमारा बहुत साथ दिया, हमेशा ही देते हैं. Thanks to all participants, जिन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल कलेक्टिव एनर्जी का सर्कल क्रिएट किया. Thanks to space, thanks to our aura, thanks to our eyes, inner eyes. And now you can see and ask yourself, are you ready for the elimination? Are you ready to empty your space? Whatever answer you have, this is the truth of the moment. Rub your hands together. And touch your face. And now see your face is illuminating. Looking like you are having divine spa. You Hanji, come back. I would like to say something, Manisha ji. Please. As I'm a healer, so मुझे किसी को लाइट में भेजना था. एक प्यारी सी बर्ड थी, yellow color bird. She was chirping all around. I sent her to light. I said, go. When you said talk to them, I said, go to light. I was sending her to light since yesterday, but today I saw her. She haven't gone. I told her, you go. Thank you so much. Another thing was, there's one patient who is on ventilator. I gave him life, and I was feeling so happy giving life. Wow. And after that, I hugged you. Oh, yes. Then I said, oh my God. And you know, when you said invite God and goddesses, they were all dancing around me. They were so happy. That was amazing, which I saw. Thank you so much, Manisha. Thank you. I am blessed to be a channel. Thank you so much. So I'm also thanks to you, and I'm so grateful to you for releasing this poor soul, beautiful soul, yellow color bajrika, that we call lovebird, yeah, and of course giving light to the patient who's on ventilator. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So see, it was nothing is planned. और जब भी मैं सेशन में आती हूँ, मैं लगता है कि लेट एनर्जी फ्लो. जो भी स्पेस को करवाना है ना, वो करवा ले. मैं तो बिल्कुल खाली होके बैठी हूँ, है ना. इट वाज नॉट एट ऑल प्लान्ड, और जो हुआ, आई एम गिविंग ऑल द क्रेडिट्स टू स्पेस ओनली. It was truly amazing, Nishani. Thank you so much. Thank you. You created beautiful energy circle. Yes, absolutely. The gratitude wala bhi. So I hand it over to Manishji now to please give your insights and any questions you would like to ask. Thank you, ma'am, and thank you, sir and ma'am, for the wonderful session. And it is the really amazing how you have to realize yourself for your life. So first of all, I would like to invite all participants, if you have any question,
And whatever I have learned today, that is the one thing, as we have deleted any file from laptop or computer, that goes into the recycle bin, and after some time, even 3 months, 6 months, 1 year, whenever they are giving the warning, your space is full, so you have to delete something. So just I want to say it's it's happening in our life. So first of all, when we are seeing the recycle, we have to see whether if there is some important thing that we have the transfer to the recycle bin we have left. So again you have to recreate inside you, and whatever the negativity, just you have to wipe up. So that is the one most thing. And another from the Sandeep ji, I'm saying ki most important thing ki you have to realize yourself, otherwise your life is the meaningless. So that is the two most important thing that I have learned, and let me try to apply in my life. And anyone, if you have any question, so you are most welcome. Otherwise I have one and two questions. The first of all, I want to give the um, uh, option to all participate to ask any question. Manisha ji, I have a question. So you mentioned about group energy. So, but it can be done alone as well, right? Yeah, group energies, it can be alone, but see, in Reiki healing or in mandala healing or in group healing, so when we are doing in group and the group sadhana, so if you are attending any satsang also, so in the satsang also you are creating, and everybody's energies are connected at satsang. Okay, so whenever you are going for any bhajan kirtan, आप देखो जब वहां से लौट के आते तो कितना मजा आता है, और घर पे अकेले आप भजन कीर्तन करते तो समटाइम्स यू फील बोर, अरे यार कौन करेगा, कल कर लूंगी मैं, है ना, अभी मेरे पास ये काम है, अभी मेरे पास वो काम है. तो जब हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो वहां पे जो है कॉस्मिक, आप जो एंजल्स हैं, तो पूजा का एक टाइम होता है ना कि नहीं मुझे 8 बजे तक पूजा करनी ही है, तो स्पेस को भी पता है कि भाई 8 बजे ना ये बंदा आने वाला है मेरे पास में, है ना, तो वो भी तैयार है आपके लिए. तो वहां पे भी आपकी ग्रुप एनर्जी वर्क करती है. बट आपके साथ में यदि आपने घेर ही लिया, देखो अकेले आप किसी को पिटाई करने जाओ तो उसका इम्पैक्ट अलग है, 10 गुंडे लेके चले जाओ तो उसका इम्पैक्ट अलग है. तो पॉजिटिव काम करने के लिए 10 लोग जा रहे हो धरना देने, तो भाई गॉड बोलेगा हाँ भैया ठीक है. तो मतलब फन है, दैट इज जस्ट जोकिंग. तो ग्रुप एनर्जीज आर डेफिनेटली क्रिएट्स वंडरफुल रिजल्ट. मेरे साथ बहुत मिरेकल्स हुए हैं ग्रुप एनर्जीज के, आई विल डेफिनेटली बताऊंगी कभी कॉन्शियसली पॉजिटिव पे. तो ग्रुप एनर्जीज आर रियली वर्किंग अ लॉट, है ना. Awesome. Thank you. Yes, Manisha ji, I जी, appreciate this group healing also and this meditation. हम लोग बचपन में भी जब मिलके सब प्रार्थना करते हैं तो उसका इफेक्ट ही कुछ और होता है. और ऐसी पीस, हमारे नेबर में एक रहते थे और उनके हम जाते थे और शाम को ऐसे जाते थे कि जाके फटाफट कर ले, आरती करने जाएंगे, प्रसाद लेके जाए. वो पीस अभी तक हमें याद आती है, बहुत ही डिफरेंट होता है. और हम लोग का ऑरा इससे हाई होता है सबका, है ना. आप याद करो रामायण डिवाइन महाभारत. है ये, आज हम लोग भी डिवाइन सोल्स हैं जो सब मिलके बैठे हैं, ऐसे कोई नहीं एक Yes. साथ हो सकता. आप याद करो रामायण महाभारत, जब हमारे पूरे मोहल्ले में एक टीवी होता था और रामायण महाभारत में हम सब लोग साथ में देखते थे, क्या मजा. आज भी एक एक डायलॉग डिलीवरी हमको याद है उसकी. और आज जो सीरियल सारे हमको याद ही नहीं है कि भाई कौन सा सीरियल आ रहा है, लेकिन वो याद है और हम बोलते भी थे बाकायदा, खाते थे पीते थे मजा करते थे सब साथ में, तो भूल ही गए हैं, है ना. तो ग्रुप का तो मजा ही कुछ और है. थैंक यू. Very true. Yeah. So I have one question from both of you. Most probably it is from Sandeep ji. Yes, sir, you are talking about the belief system. Okay, sir. So first of all, I want to know कि हम अपने life में how we can create belief system, because without belief system, I don't think कि our existence will have this anything. So my question is that कि मैं अपने अंदर में belief system create कैसे करूँ?
तो मनीष जी, एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि वी आर लिविंग, हम लोग एक बिलीफ सिस्टम के साथ जी रहे हैं, है ना। आपको आपके भी कुछ बिलीफ सिस्टम होंगे जो आप कैरी ऑन कर रहे हो, राइट। और वो बिलीफ सिस्टम जो है वो अभी एकदम से नहीं बने हैं। वो बिलीफ सिस्टम आपके सिंस योर चाइल्डहुड, ये एडल्टहुड और जब जो अभी अवस्था में वो कैरी ऑन हो रहे हैं, जाने अनजाने वो बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रांग हो गए हैं, राइट। तो अभी हमें अगर नए बिलीफ सिस्टम जो है, जैसे मैंने अपने सेशन में भी बोला, नए बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है वो अनलर्न करना पड़ेगा, एंड दैट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, राइट। क्योंकि बिलीफ सिस्टम हमारे इतने स्ट्रांग हो चुके हैं तो होते हैं कि उसको उनको जो है वो अनलर्न करना इज अ रियल चैलेंज। सो वी हैव टू अडॉप्ट अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस के थ्रू हम अनलर्न करेंगे, और अनलर्न करने के साथ वो धीरे धीरे फिर नए बिलीफ सिस्टम जो आप सोचते हो कि वी नीड टू कैरी ऑन नाउ, राइट। सो जब मैंने इनर लाइट की बात करी, तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम को भी टच करती है, राइट। एंड यू रेडिएट ऑल्सो अकॉर्डिंगली, जो आपके बिलीफ सिस्टम है उसी के अनुसार आप रेडिएट भी करते हो, राइट। और आपके एक्शंस भी वैसे ही होते हैं, आपकी कन्वर्सेशंस भी वैसे ही होती हैं। और आप देख लो, कहीं भी आप बैठे हो, आपके क्लाइंट के साथ कहीं बैठे हैं या अपने परिवार में कहीं बैठे हैं, यू आर थिंकिंग समथिंग, वो बिलीफ सिस्टम है, और उसी के बेसिस पे आपने उनके कोई क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, राइट। तो ये आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। सो दिस इज हाउ वी नीड टू फॉलो दैट प्रोसेस। और वो प्रोसेस कुछ भी होता है, जो प्रैक्टिसेस, जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, सो वो प्रैक्टिसेस कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंगली, राइट। और उसका पर्पस हम अलाइन करके कि मैं इसलिए ये प्रैक्टिस कर रहा हूं, और we'll go towards that process, and we'll go step by step, and then ultimately you will find that you are becoming, and you are adopting that kind of a belief system, because overnight nahi hoga wo. Yeah. So my second question is related to that same line of question. Suppose that I have created belief system in myself that I have to do dinner before 8 o'clock. Okay. Nowadays, party, social activity, and marriage function, etc., that is the common thing. And I also believe that in every week we have to attend any event, party, anything. Okay. Right. Marriages are there. Yes. Marriages are there. So होता क्या है सर कि when we are going for any party, any event, any conference or anything, so our belief system is the contradictory. Its reason is that कि I have the belief system to have the dinner at 8 p.m. but मैरिज में, किसी इवेंट में, किसी पार्टी में 10, 11 कुछ भी हो रहा है, 10 to 11 तो नॉर्मल चीज है। तो दैट पर्टिकुलर टाइम इफ आई एम शोइंग कि नहीं कि मेरा तो 8 बजे का खाने का टाइम है, नाउ आई विल नॉट टेक डिनर, देन इट विल शो एट द एरोगेंस। तो आई हैव टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर टाइम माय बिलीफ सिस्टम, और आई हैव टू कैरी ऑन व्हाट आई हैव टू डू। नो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, एंड ये मेरे साथ अक्सर होता है। तो मैं जैसे जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं कैसे इसको डील करता हूँ, दैट आई आल्सो शेयर। बिकॉज सी, माय रूटीन इज आल्सो देयर कि मैं 8 बजे, 7:30 बजे खाना खा लेता हूँ, राइट। अब मुझे कहीं जाना है, एज अ सोशल ऑब्लिगेशन है, अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाता हूँ, राइट। तो मुझे ये डिसाइड करना है अपने लिए कि व्हाट, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने लिए है ना, राइट। आपके जो भी सामाजिक जो भी ऑब्लिगेशंस है वो रहेंगे, इजंट इट। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप कोई जो आप, जैसे आपको 10 बजे खाना खाना है, 11 बजे खाना खाना है, सबसे पहले तो मैं घर से खाना खा के जाता हूँ, राइट। सो दैट आई डोंट क्रेव फॉर द फूड, राइट। जो मेरे आसपास हो रहा है मैं उसको होने देता हूँ, आई बिकम ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर बन जाएंगे जब हम, तो आपको वो चीजें इफेक्ट नहीं करेंगे, इवन योर क्रेविंग फॉर द फूड विल ऑल्सो डिमिनिश, राइट। और जब कोई आगे पूछता है आपने खाना खा लिया, मैंने कहा मैंने खाना खा लिया, हाथ जोड़ देता हूं मैंने खाना खा लिया है, राइट। एंड उसमें क्या है कि आप किसी को नाराज भी नहीं कर रहे हो, है ना। एंड आपको इतनी बड़ी गैदरिंग में आप अपने आप को कैसे अलूफ रख रहे हो, और साथ में वहां भी रह रहे हो, है ना। तो वो दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बिठाना है, राइट। आप अगर ये सोचेंगे कि मतलब ये क्या कहेंगे, या मुझे एरोगेंट में फील करूंगा,
सो ऐसा नहीं है, वो लोग भी जो भी आपको बोलेंगे वो भी समझ जाएंगे अल्टीमेटली. सो इट इज योर आउटलुक कि आप उसको कैसे, रादर देन दे नो गिविंग यू अ फोर्स्ड आउटलुक कि आप ऐसे बिहेव करो. इट इज यू, इट इज यू. और अगर आप खुश हो अंदर से, और अगर आप जो है जो कर रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड, आप अपने मतलब मैं और ये कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हो, तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी होगा कि मैंने फॉलो किया अपना, राइट. तो इनिशियली हो सकता है कि ये चीज बार बार हमें वो दिमाग जो हमारा है, जो हमारा थॉट है, वो वहां लेके जाएगा हमें, राइट. लेकिन यही है कि कैसे अपने आप को रिस्ट्रेन करें, थोड़ा सा हम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. और द बेस्ट थिंग इज कि इस सिचुएशन में आई ऑलवेज गो विद हैविंग स्टमक नो लाइट फूड लेके अपना मैं जाता हूँ, ताकि मुझे अगर मैं 11 बज गए 12 बज गए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है. सो आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड. तो मेरे एक्शंस भी वैसे ही होंगे, मेरा इंटरेक्शंस भी अच्छा होगा, और लोगों को मैं नाराज भी नहीं करूंगा. Thank you, sir. Thank you. Really practical exposure. Thank you. Ma'am, can I ask one question? Yes, please. Yes. Sure. Ma'am, it was a lovely session. My question is to Dr. Manisha. Ma'am, आपने भी मेडिटेशन में अपने आप को, जो पर्सन को फॉरगिव करना था, उसको रिफ्लेक्ट कराया. यू योरसेल्फ इज फॉरगिविंग योरसेल्फ. ये डेली प्रैक्टिसेस में कैसे किया जाए? मतलब बहुत ही पूरी मेडिटेशन में दैट वाज द बेस्ट, क्योंकि स्माइल उसी टाइम आई जब मैंने अपने आप को उसके अंदर देखा. और वो हार्ट बिल्कुल ही ऐसे हो गया कि लाइक बहुत बड़ा बोझ हार्ट से उतर गया. हाँ, तो ये डेली कैसे हो? क्योंकि जब एंगर का मूवमेंट आता है या कोई बात आपको ट्रिगर करती है, उस टाइम आप अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते. करेक्ट. दूसरों की गलती ज्यादा दिखती है ना. हाँ, एग्जैक्टली. क्योंकि जैसे आपने वो बटन डिलीट वाला कंसेप्ट बोला, तो यूजुअली जब मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाती है तो वो यही बोलते हैं, मेरा तो पेंटियम 4 है, तेरा शायद प्रोसेसर 7 हो गया, अब 9 हो गया. तुझे सारी याद है पिछली बातें. तो forgiveness is like it's necessary, but reflecting yourself in other person, I think that is the best solution. तो उसको डेली कैसे प्रैक्टिस किया जाए? तो बहुत सिंपल है. जस्ट आस्क योरसेल्फ. देखो, जो मैंने सीखा वही मैं बताऊंगी, बाकी आपका खुद का है कि आपने क्या लर्न किया है. मैं हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ अपने आप से, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट फॉर मी? व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट एंड व्हाट इज द एनर्जी आई एम कैरिंग फॉर द ट्रूथ ऑफ द मोमेंट? इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू शुड सिट डाउन और आंख बंद करके बाबा हो जाओ. नो, नॉट एट ऑल. ऑब्जर्वेशन. आप जब कॉन्शियसली लाइफ को जीने लगते हो ना, पानी भी पियो ना तो कॉन्शियसली पियो. जब आप लाइफ को देख रहे हो ना, कॉन्शियसली पियो. अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, बहुत हमारे मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स में, इतना ग्रंथों में इतनी अच्छी बात लिखी है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि. भाई मैं ऐसी हूं, मैं तुमको देख रही हूं ना, तो ये मेरा रिफ्लेक्शन है. आई कांट चेंज हिम. तभी तो पति पत्नी में लड़ाई, सॉरी, हाँ मैं इस रिलेशन को इसलिए ज्यादा लेती हूँ क्योंकि सबसे लाइव एग्जांपल यही मिलता है. यही होता है. हाँ, राइट. लड़ाई हो रही यही है सबसे ज्यादा. भाई मैं भी सही हूँ, तू भी सही है, तो गलत कौन है? Who is wrong? So situation is wrong. Our thought is wrong. मैं wrong और right नहीं बोलूंगी. It is situational. So बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस कर सकते हो आप कि आपने अपने, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज जो मुझे लगता है, संदीप जी प्लीज करेक्ट मी, मनीष जी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन बिलीफ सिस्टम एंड रूल. मैंने रूल बनाया है कि भाई ये तो है ही, मुझे तो सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, दिस इज माय रूल. बट माय बिलीफ सिस्टम इज, मेरा हस्बैंड तो ऐसा ही है, मेरी स्पाउस तो ऐसी ही है, दिस इज माय बिलीफ सिस्टम. एंड कहाँ से आया ये बिलीफ सिस्टम? मेरे एंसेस्टर्स ने डाला. भाई मम्मी पापा को भी लड़ते देख रही हूँ, बहन भाई को लड़ते देख रही हूँ, हर रिश्ते में कहीं ना कहीं लड़ाई है. सो मान लो कि जहां प्यार है वहां लड़ाई है. मैं लड़ाई कर सकती हूँ, तो क्या मैं प्यार नहीं कर सकती हूँ? अच्छा, जो हस्बैंड एक स्पाउस गलती करता है तो हम उसे माफ नहीं करते, बेटा गलती करता है तो माफ कर देते हैं. राइट. लड़की गलती करती, बहू गलती करती तो माफ नहीं करेंगे, बेटी गलती करती तो माफ कर देते हैं. तो ये बिलीफ सिस्टम ही है बेसिकली. दिस इज बिलीफ सिस्टम ना. अंडरस्टैंड? सो क्या मैं दोनों तराजू एक, मैं ही तौलने वाली तो मैं ही ना.
Nobody else. तो मैं अपने आप को देखती हूँ सबसे पहले तो Thank you, ma'am. It तो was मैं अपने आप को wonderful. देखूंगी सबसे पहले एंड वहां पे मैं अपने आप को रख के देखूंगी. हमारे रख के. प्रोफेशन में एक बात बोलते हैं टेबल पे जब हम बोलते हैं ना कि बोलते हैं जस्ट लुक एट योरसेल्फ. अभी हम किसी टीचर से मिलने जाते हैं, हम अपने वीसी से मिलने जाते हैं तो वीसी गुस्सा कर देता है कई बार. डोंट डू लाइक दैट. तो हम बोलते हैं कि जस्ट रिवर्स योर पोजीशन. आप यदि उस पोजीशन पे तो क्या करोगे. बोलते put yourself into his shoes. हाँ हिज शूज. तो ये राइट है. आप देखिए आपको डे टू डे क्या आप दिन रात उठते बैठते आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है. ठीक है. Thank you Thank you so very much for much. asking beautiful question. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much everyone for those wonderful inputs and the question and answers also. बहुत enlightening और enlightened हो गए हम उनके through. But we have a very special section right now, which I'm sure all of you will find amazing, which Dr. Nupur is going to guide us with, how to see our own aura. Yes, so I invite you, Nupurji, to please enlighten us about that as well, because we all need to do that. मनीषा जी ने अभी थोड़ा बताया है, but आप थोड़ा सा और उसमें expand कर दीजिए with your perspective. Thank you so much, Menu ji, for inviting me on this forum and in this spiritual fest. And of course, Dr. Shabana, and I would I'm very grateful to Mavin platform for, sharing my knowledge with you. Of course, knowledge is everywhere. And about today's session, everything was so beautiful. But can you see your aura with your naked eye? आप अपनी आंखों से, खुली आंखों से aura देख सकते हैं. Do you believe in this? Type yes or no in your chat box. अगर आप मानते हैं इस बात को तो आप हाँ लिखिए, अगर नहीं मानते हैं तो ना लिखिए. Great. I can see many answers. Okay. One of the person says no also. Doesn't matter. Once you see my presentation and my method, how to see aura, how to see any aura, you will be amazed by your own capability. Anyone can see aura because this is not a rocket science. It is simply a practice. Okay. You will be able to see with your naked eye. Just you need to practice a little bit. Okay. So let me give you a presentation, a short one, so that you have more clarity. And as you know, human aura is, or any kind of aura, is electromagnetic waves around a person, around yourself or anybody, whoever is there. Even non-living object also have aura because it is being used by living person. Okay. So let's go to a presentation, a short one. I won't take much of the time. And yes, I would request Shabana not to send it live because there are some pictures which are copyrighted material. Thank you so much, Shabana. So I will just share. You are the host, so if you can stop the live stream. Yeah. 1 minute. I have to open my. Let me do it. I'm doing it. Just a minute. I keep losing myself amongst the files. Now, can you see this file? Yes, but it's still live.